Hello children, how are you? I hope you all are doing well and studying well. तो बच्चों हमने अलग अलग writing skills के तरीके देखे, जैसे we saw how to write an essay, we saw how to write a story, we've also seen how to write an autobiography. अब हम देखेंगे how to write a dialogue. So the name of this part of the chapter is called writing a dialogue. Alright? So बच्चों डायलॉग क्या होता है? डायलॉग इज अ कॉन्वर्जेशन. ओके, दो लोगों के बीच में या दो या से ज़्यादा लोगों के बीच में जो होता है वो होता है डायलॉग. इट्स अ कॉन्वर्जेशन बिटवीन टू और टू एंड मोर पीपल. क्लियर? सो देखते हैं कि ये कॉन्वर्जेशन कैसे लिखा जाता है. अ कॉन्वर्जेशन बिटवीन टू पीपल इज नोन एज अ डायलॉग. Sometimes you may be asked to write a dialogue between two animals or two inanimate objects. There is always a difference between the spoken and the written forms of a language. When we speak, we use many words and expressions that we do not use when we write. For example, we behave more freely when we are amongst our friends than when we are amongst people we do not know so well. Some of the rules that you should follow when writing a dialogue. So बच्चों, ये डायलॉग जो होता है ये दो लोगों के बीच में होता है. ओके, और यहाँ पे कहा जाता है कि ये दो लोगों के बीच में हो सकता है, एनिमल्स के बीच में हो सकता है या थिंग्स के बीच में. सो बच्चों, जनरली क्या होता है जब हम कुछ बोलते हैं, ओके, और जब हम कुछ लिखते हैं उसमें बहुत सारा फर्क होता है. सो व्हेन वी स्पीक वी आर फ्री, ओके, स्पेशली व्हेन वी आर विद आवर फ्रेंड्स. तो हमारे मन में जो आता है हम बोल देते हैं. Okay, but when we write, we use our words very carefully. Okay, we ensure कि जो हम लिख रहे हैं, it should be clear to the person who's going to be reading it, और उनको समझना चाहिए. ठीक है? So और उसमें थोड़ा सा हम लोग we are always very careful while writing. Alright? So for writing a dialogue also, there are a few rules that we have to follow. Your language must be simple and direct. For a dialogue represents actual speech. Okay, two persons are speaking to each other as if in real life. Your language must be simple and direct. For a dialogue represents actual speech. Two persons are speaking to each other as if in real life. Though your language may be racy and colloquial, avoid the use of slang. That is, expressions or words that are not regarded as polite or एक्सेप्ट. सो बच्चों, जब हम डायलॉग्स लिखते हैं तब हमारी जो लैंग्वेज, लिखने की लैंग्वेज जो होती है ना, इट हैज़ टू बी सिंपल. ओके, सो दैट आप जो लिख रहे हो सामने वाले को समझ में आए. एट द सेम टाइम इट शुड बी डायरेक्ट टू द पॉइंट. ओके, उसके बाद आपको ऐसे उसको पोर्ट्रे करना है एज दो इट इज रियल लाइफ कॉन्वर्जेशन बिटवीन टू पीपल. ओके, सो दो योर लैंग्वेज मे बी रेसी एंड कॉलोक्यूल, बस उसमें आप अपने व्यूज एक्सप्रेस कर सकते हो, पर एट द सेम टाइम स्लैंग वर्ड यूज करना अवॉइड करो, वेर इन लाइक यू आर यूजिंग वर्ड्स दैट आर नॉट पोलाइट, ओके, और दे आर नॉट एक्सेप्टेबल. सो डू नॉट यूज सच वर्ड्स. यूज वर्ड्स विच आर एक्सेप्टेबल बाय पीपल एंड विच आर पोलाइट. ओके, तो आपको अपने वर्ड्स पे काफ़ी ध्यान देना है. ऑलराइट? सो यू मे यूज़ कॉन्ट्रैक्शंस और इंटरजेक्शंस. ठीक है, तो हमने इंटरजेक्शंस भी किए हैं, हमने कॉन्ट्रैक्शंस भी किए, जहाँ पे हम लोग से वुडन लिखते हैं इन प्लेस ऑफ वुड नॉट. ओके, सो ऐसे सब चीज़ें आप यूज़ कर सकते हो. When writing a dialogue, always keep in mind the situation in which it is taking place. Keep to the point and do not make your dialogue too long or involved. सो बच्चों, जब आप डायलॉग लिखते हो तो आपको सिचुएशन को माइंड में रखना है और आपके डायलॉग्स जो आप लिखोगे उसको क्रिस्प रखना है. बहुत सारे लंबे लंबे डायलॉग्स नहीं लिखने, ओके, और बहक नहीं जाना है. Just don't keep on writing, but you have to write a dialogue in such a manner that it conveys, okay, the message that you want to give. Human characters must be given names. Put a colon after the name of the speaker and then write the word spoken. See the example given below. So बच्चों, हम ये कैसे लिखना है वो थोड़ा डिटेल में अभी देखेंगे. ओके, तो हम जब ह्यूमन कैरेक्टर्स जो होते हैं उनको हम नाम देंगे, उनके आगे कोलन लगाएंगे और फिर उनका डायलॉग लिखेंगे. Okay, since there are two speakers, make sure that each speaker gets a fair share of words to speak.
The conversation must not be one-sided. That is, one speaker should not be made to merely listen to the other. So जब आप डायलॉग लिखोगे, जब आप कॉन्वर्जेशन लिख रहे हो, इट हैज़ टू बी बोथ वेज. मतलब आप सिर्फ अकेले ही सुनते रहोगे ऐसा नहीं चलेगा. आप दोनों को भी इक्वल अपॉर्चुनिटी देनी चाहिए बात करने की. Alright? So that is how a dialogue is written. Let's read this example. Read the following example of a dialogue between two friends planning a class party for the last day of a school term. चलो देखते हैं कि ये दोनों क्लास पार्टी का प्लान बना रहे और डायलॉग कैसे हो रहा है उन दोनों के बीच में. ओके, सो नैना, सी हाउ इट इज रिटन. नैना, सो दैट्स द फर्स्ट कैरेक्टर. उसके आगे कोलन लगाया एंड देन शी स्टार्ट्स her dialogue starts. Sonia, have you decided on the food? Up next character is Sonia. Sonia, yes, but let's plan the decorations first. Naina, I have told Ajay, Tony and Vinita to bring balloons. Some of the others are bringing streamers, ribbons and Chinese lanterns. Sonia, that's okay then, but we'd better be careful. We are not supposed to stick anything onto the walls. Tell Preeti and Vijay to get lots of strings. We'll just tie the streamers to the windows. Anyway, we'll need string for the balloons. Naina, we'll buy chips and Cheetos. Sonia, oh, please get some kurkure. I simply love kurkures. Naina, Sunita is bringing idlis for everyone. Her mother makes delicious idlis. Sonia, some of the others are bringing cheese and vegetable sandwiches. Naina, yummy. What about sweets? Sonia, we'll have plenty of money left over to buy pastries and cold drinks. Naina, oh, my mouth is watering already. Just don't forget to tell Ashita and Shreya to get large paper bags. We have to collect all the leftovers and paper plates and glasses. Put them in the bags and then put the bags into the bins. We mustn't leave the classroom in a mess. Sonia, don't worry. They'll get the bags. They are also getting the paper plates and cups. Naina, I can't wait till Wednesday. It's going to be a super party. सो बच्चों, देखा आपने इस डायलॉग्स में इन दोनों के कॉन्वर्सेशन का आपने देखा. उन्होंने कॉन्वर्सेशन शुरू कर दी है वेर इन दे हैव स्टार्टेड ऑफ अबाउट टॉकिंग अबाउट फूड. बट आपने देखा जब हम पार्टी ऑर्गेनाइज करते हैं तब हम सारे चीज़ों को कंसिडर करते हैं. Like food is considered, decoration is considered, getting things is considered. तो उन्होंने इस dialogues में, in conversations में, everything is what they have focused on. They focused on the food part, they have focused on the decorations, they have ensured कि classroom में जैसे उनको instructions है कि कहीं पे भी wall पे भी कुछ भी नहीं चिपकाना है. So they have thought of getting strings in place of that. So everything is written so nicely and so systematically. As if जब आप और अपने फ्रेंड के साथ ऐसे कुछ प्लान करते हो तो कैसे होता है. एट द सेम टाइम जब दूसरे भी इन्वॉल्व होते हैं तो किस किस को कौन सी चीज़ एलोकेट कर दी है उसके बारे में बताया जा रहा है. सो isn't this a beautiful way of writing a dialogue? So children, use this passage as a hint, okay, and do the exercise that follows. Be smart. You have to write the following dialogues. First, between a mother and her son or daughter who wants to watch television all the time during the vacations or on holiday. So you have to write the next one is between a boy or a girl who has been caught at some mischief and his and her father. Okay? तो पापा और बच्चों के बीच का कॉन्वर्सेशन लिखना है जहाँ पे बच्चे को पापा ने पकड़ा है मिस्चीफ करते वक्त. Between a teacher and a pupil about a forthcoming examination. Between two friends who want to use the summer vacation to do something constructive rather than merely idling it away. Between an old car that is still running and a new one which frequently breaks down. So जल्दी बच्चों अपना conversation लिखना शुरू कर दो. Okay, it doesn't have to be a very long one. It can be a crisp one, or you can take the help of the passage that has already been written. All right, children, so get going.